issues related with the training, or what are the problems, why training is not effective in India, why it is not resulting in change in the behavior of the bureaucracy. Clear? See, first and foremost important point is training is focused more on the structural and procedural aspect, and they ignored the behavioral aspect. Even in training, they are not focusing on the behavioral aspect. So, whatever training is being provided by training institute, bureaucrats not taking them seriously because their behavior is still elitist. They still have colonial mindset. Clear? And see, one question UPSC has asked that training is considered as paid holiday. होता है ना, भारत दर्शन यूपी दर्शन करवाते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के टाइम पे. सो मेनी ब्यूरोक्रेट्स, मेनी ट्रेनी ऑफिसर ट्रेनी, दे कंसिडर्ड ट्रेनिंग एज अ पेड हॉलीडे because there is no relation of training with the rank allocation, with the cadre allocation, with their performance, score of training, marks of training, that is not added to their career advancement. So बस उनको सिर्फ पास होना होता है. They don't want to excel in the training. They don't take this training seriously. And see, another problem is those officers who are posted for the training in the training institute, they considered that as punishment posting. And generally it happens that those officers who do not have the same view as of the government, they are generally transferred to the training center to train the officers. Clear? So it is said that in India, training is given with the wrong purpose to the wrong people at the wrong time. Training is given with the wrong purpose to wrong people at wrong time. क्लियर? जो ट्रेनिंग ले रहा है वो भी नहीं सीरियस है, जो ट्रेनिंग दे रहा है वो भी नहीं सीरियस है, और स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे फोकस है, बिहेवियरल एस्पेक्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड है. क्लियर? एंड सी, जो एब्रॉड ट्रेनिंग होती है, सिविल सर्वेंट्स की जो एब्रॉड ट्रेनिंग होती है, उसमें जनरली सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स आ जाते हैं, एंड आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो रिटायर हो जाते हैं. तो दैट ट्रेनिंग इज ऑफ नो यूटिलिटी. अब तो वो रिटायर हो गए और यंग ऑफिसर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एब्रॉड ट्रेनिंग के लिए. क्लियर? सी, one another problem is training is highly skewed in nature. Training is highly skewed in nature. For example, see, for example, you can take the example of police administration. You can take example of police administration. See, IPS officers are less than 2% of the entire police force. They are approximately 2% only, and 90% of expenditure of training is spent on them. Clear? Whereas below IPS, below DSP level, there is almost 95%, 90% पुलिस फोर्स, और उनके ट्रेनिंग पे बहुत कम पैसा खर्च होता है. क्लियर? और सी, ट्रेनिंग की एक प्रॉब्लम ये भी है, इट इज टू एकेडमिक इन नेचर एंड इग्नोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. टू एकेडमिक इन नेचर एंड इग्नोर्ड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. क्लियर? सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद द ट्रेनिंग. और एक और बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि फ्यू ऑफिसर इन ट्रेनिंग, दे लीव द ट्रेनिंग इन द मिडिल. इन द मिडिल ऑफ द ट्रेनिंग दे लीव द ट्रेनिंग टू इम्प्रूव देयर रैंक इन द यूपीएससी. जैसे किसी को आईआरएस मिल गया तो वो फिर से ट्रेनिंग छोड़ देता है एग्जाम देने के लिए. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट व्हाई ट्रेनिंग इज नॉट इफेक्टिव इन इंडिया. क्लियर? अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? प्लीज गो एंड रिफर द सेकंड ARC. क्लियर?